So as I was saying that today we will do one more interesting topic of comparing unlike fraction. तो अनलाइक फ्रैक्शन को जब भी हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे. अभी तक हमने लाइक फ्रैक्शन किया. लाइक फ्रैक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि यदि लाइक फ्रैक्शन है तो जितना ज़्यादा आपका न्यूमरेटर होगा उतना बड़ा वो फ्रैक्शन होगा. तो इफ़ आई एम सेइंग दैट 11/2 एंड 1/2 तो क्या बड़ा है, तो ऑब्वियसली 11/2 बड़ा होगा 1/2 से. हमने अभी तक ये किया था. अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के. अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. लाइक एक में डिनोमिनेटर इज 3, दूसरे में डिनोमिनेटर इज 5 और समथिंग लाइक दैट. दीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. चलिए, अनलाइक फ्रैक्शन के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अब अगर आपको बोला जाए कि 1/3 एंड 1/5, as you can see there are two fractions 1/3 and 1/5. इसमें से क्या बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा होगा यदि हम इसकी बात करें तो देखते हैं हम. सेकेंड पिज़्ज़ा इज़ नॉट लुकिंग द सेम. दिस इज़ द सेम राइट. सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं 1/3 एंड 1/5 की. 1/3 मीन्स 3 slices of a pizza. 1/5 means 5 slices of the same pizza, same size of the pizza. Right, 1, 2, 3, 4, 5, something like this, right? Now, एक है 1/3, एक है 1/5. तो 1/3 मीन्स हम सिर्फ इतनी स्लाइस की बात कर रहे हैं. जो 1/3 पोर्शन है स्लाइस का उसकी बात कर रहे हैं, राइट. अगर हम 1/5 कर रहे हैं तो हम इस स्लाइस की बात करें तो विच वन इज़ बिगर, विच वन इज़ बिगर इफ द पिज़्ज़ा इज़ ऑफ सेम साइज. ऑब्वियसली 1/3 जो है वो बिगर है, राइट. अब अगर हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. हम इसको लेते हैं 2/3 and 2/5. Now tell me which one is bigger. 2/3 means 2 slices out of 3 slices and 2/5 means 2 slices out of 5 slices. Still we can see that 2/3 is bigger, right? 2/3 is bigger, here 1/3 is bigger. So what we can see in this, we can see that if the denominator is smaller, it means the fraction is bigger, right? जितना छोटा आपका denominator होगा उतना बड़ा आपका fraction होगा. Let's read something more about it. So they are saying in 1/3 we divide the whole into 3 equal parts and take 1, right? Same ways in 1/5 we divide the whole into 5 equal parts and take 1. So let's note that in 1/3 the whole is divided into less number of parts than the 1/5. Obviously जो 1/3 है उसमें हमने 3 parts किए, whereas in the 1/5 we have divided into 5 parts, right? So the equal part that we get in 1/3 is therefore larger than the equal part we get in 1/5. Obviously जो 1/3 का part है it is bigger than the part of 1/5. Since in both cases we take the same number of parts, the portion of whole showing 1/3 is larger than the portion showing in 1/5 and therefore 1/3 is greater than 1/5, right? इन्होंने भी सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है. अगर हम न्यूमरेटर को चेंज कर दें, 1 की जगह पर 2 कर दें, so now the fraction is 2/3 and 2/5, and as we can see that the 1/3 is greater than the 1/5, so same ways they have written that 2/3 is greater than the 2/5. In this situation everything is same but they just have changed the numerator, right? अब इन्होंने न्यूमरेटर चेंज कर दिया. अब हम और देख लेते हैं इस पर क्या है कि हम एक की जगह 2 स्लाइसेस ले रहे हैं. एज वी हैव सीन कि इन दिस केस 2/3 होगा वो होगा बिगर देन द 2/5. चलिए आगे करते हैं. We can see from the above examples that if
if the numerator is the same in two fraction. If the numerator is same, then the fraction with the smaller denominator is greater of the two. अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, एज वी कैन सी यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था, 2 था, यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या था, 2 था, दोनों के केस में न्यूमरेटर 2 था. तो इफ़ द न्यूमरेटर इज सेम, तो जो भी फ्रैक्शन जिसका भी डिनोमिनेटर कम छोटा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा. Let's take one example which is given here, 1 by 8 and 1 by 10. 1 by 8 or 1 by 10, we can see that the numerator is same. न्यूमरेटर दोनों में 1 1 है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा. तो वी कैन से दैट द 1 by 8 इज़ बिगर देन 1 by 10. इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ 3 by 5 and 3 by 7. तो अगर हम 3 by 5 and 3 by 7 की बात करें तो ऑब्वियसली अगेन द न्यूमरेटर इज सेम, सो द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज 5 1, so 3 by 5 would be bigger than 3 by 7 here. And in the last question, 4 by 9 and 4 by 11, here also 4 by 9 would be greater than the 4 by 11 because of the smaller denominator and same numerator. Now let's arrange this question, let's arrange these fractions into increasing order. Okay, तो अब हम यहाँ पे भी सेम करेंगे. न्यूमरेटर हम देख सकते हैं सारे न्यूमरेटर सेम है, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा. बेसिकली जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा वो फ्रैक्शन होगा. तो वी विल स्टार्ट विथ 2 by 13. 2 by 13 would be the smallest fraction here. इसके बाद आएगा 2 by 9. Now we have done 2 by 13, 2 by 9. Next is 7. So here 2 by 7 will come. After that 2 by 5 will come. And 2 by 1. So this is the smallest denominator. This fraction would be the greatest. So ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा. Okay, let's try this question. Try this question, you have 40 seconds. Try this A1. Okay, so we have to arrange these fraction into increasing and decreasing order. Okay, तो हमने बात की थी कि if the numerator is same, तो जितना छोटा वो डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा वो फ्रैक्शन होगा. As we can see that the numerator is same here, तो बेसिकली जितना छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन उतना ज़्यादा बड़ा है, राइट. तो if we are writing the fraction in ascending order, we will start with the smallest fraction. So here the 50 is the biggest number, so this fraction would be the smallest. So we will start with 1 by 50. The second fraction would be 23 1, so 1 by 23. Third fraction would be this one, so 1 by 17. Then 1 by 12. Okay, now 1 by 9. This one we have also done. Now 1 by 7, and at the end 1 by 5. Right, so this is how we will write it in ascending order. And for descending order, you can start with the biggest number and go like this.
Now try question number B. Here also the numerator is same, तो हमें बस डिनोमिनेटर देख के इन्हें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so we will start with the biggest denominator. Biggest denominator is 17 here. So this, the second would be 13. Third would be 11. Fourth would be 7. Now 5. 5 के बाद 4. And at the end 2 will come. So this is how we will write down the fraction in ascending order. For descending order, it would be 3 by 2, 3 by 4, 3 by 5, 3 by 7, 3 by 11, 3 by 13, and at the end it would be 3 by 17.